Now we'll do the significance of ASEAN to India. Okay. So good morning to everyone. So how are you all? Good. चलिए अब आज़ादी के बाद हम लोग अब आज़ादी को इंटैक्ट करने के लिए और इसको मेंटेन रखने के लिए लेट्स डू सम वर्क. ठीक है. Now you're as a being civil servant, you have one of the job to keep the spirit of democracy, constitutions alive. रखना है उसे. Work according to the constitution. So write down importance of ASEAN to India. Why ASEAN is important for India? So first is strategic. And whenever we are talking about the importance ना एशियान के रिस्पेक्ट में, तो वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन में क्या इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द इंडो पैसिफिक. ये सभी कितने थे? दीज आर द नेशंस हु आर इन इंडो पैसिफिक हु हैव कम इन 1967 टू मेक अ एसोसिएशन. ठीक है. तो फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. राइट डाउन. द राइज ऑफ चाइना हैज लेड Good morning, Rajji. The rise of China has India to put forth FORTH. Rise of China has led India to put forth its best efforts to engage with ASEAN. The rise of China has led India to FORTH its best efforts. The rise of China has led India to put forth FORTH its best efforts to engage with ASEAN as a regional grouping. Regional grouping. ASEAN as a regional grouping. Next point. The ASEAN countries have always looked to India for balancing against China. Look to India for balancing against China. Yes, balancing against China. Next point. In the era of multilateral alignment, comma, the geopolitics of Indo-Pacific region will be defined by India's engagement and cooperations with ASEAN. Will be defined by India's engagement and cooperations with ASEAN. Clear? So this is security. Next is economic. East
and Southeast Asia, East and Southeast Asia, are important economic blocks in the world trade architecture. East and Southeast Asia are important economic blocks in world trade architecture, and together they command more than together they command more than 1/3 of the world trade. Next point, ASEAN-India economic relationship has immense potential to grow further. ASEAN-India economic relationship, ASEAN-India economic relationship has immense potential to grow relationship further to grow the relationship further through both trade and investment. Next, the Make in India initiative. The Make in India initiative, in conjunction with the recently implemented initiative, in conjunction with the recently implemented investment agreement between India and ASEAN has the potential to facilitate India's integration in ASEAN value chain. Has potential to facilitate India's integration in the ASEAN value chain. Value, V-A-L-U-E, value chain. This is economic. Next is maritime security. Okay? And we have written the trade and investment between India and ASEAN and all this, right? Next is maritime security. Countries of the Indian Ocean region, countries of India Ocean region Indian Ocean region have repeatedly suffered, लगातार repeatedly suffered due to the rise in piracy, illegal migration, due to rise in piracy, illegal migration,
trafficking of drugs, arms, trafficking of drugs, arms, and humans on the transnational level, as well as maritime terrorism. As well as maritime terrorism. ठीक है, next one. ASEAN Regional Forum allows India. ASEAN Regional Forum allows India to discuss these issues which are of immediate concern and can be only resolved on a multilateral level. Only resolved on a multilateral level. It means these type of issues cannot be resolved by a single-handedly by any nation. अब पूरे एरिया की बात है, every nation of the area who have been affected has to be work together to resolve these types of issues which is hampering each and every nation in the region. Clear? So this is maritime security. Next, UNSC, United Nations Security Council. UNSC. India needs support of ASEAN nations. India needs support of ASEAN nation for its bid bid for the permanent membership to UNSC. Bid for its permanent membership to UNSC. ठीक है, right? Next is connectivity. Connectivity. India is working towards formalizing its transit agreement. India is working towards formalizing. Formalizing means you can say that is implementing towards its transit agreement and establishing better connectivity. Its transit agreement and establishing better connectivity infrastructure. With this reason through land, water and air. With this reason through land, water and air. Can you name any one or two connectivity which India is planning with the ASEAN? INTC, right? Then there is an Thailand, right? Myanmar, Thailand, India, Bangladesh relationship. जो आपका फिर गंगा मैकॉन भी हम नॉट कर सकते हैं, जो route through sea and air. So these are the connect. Already we have done all these. आप अगर एग्जाम्पल यहाँ लिखना तो यू कैन राइट दोज एग्जाम्पल हियर ऑल्सो, राइट? आप अपने से एग्जाम्पल यू कैन कोट इफ यू वांट, ठीक है? लेकिन याद रखिए एग्जाम में अगर आप कोई एग्जाम्पल अगर ऐसे मतलब आप पॉइंट्स लिख रहे हो, राइट, एंड यू आर राइटिंग एन एग्जाम्पल, तो मेक श्योर कि आप सभी पॉइंट्स के आगे एक एग्जाम्पल लिखें इफ यू आर राइटिंग एन एग्जाम्पल फॉर वन और टू पॉइंट्स.
that will help or give a impression you have a thorough knowledge, deep knowledge. एक अच्छा मार्क्स फैच होगा। और एग्जाम्पल से देने से ऐसा समझ में आता है एग्जामिनर्स को कि आपके पास अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपने बहुत एक रटा नहीं है, आपने कोई चीज़ याद नहीं की, बट आपने उसको समझा है। तो जहाँ भी पॉसिबल हो ट्राई टू गिव सम, एक एग्जाम्पल भी देते हैं दैट विल बी ओके। ऐसे नहीं बहुत सारे देने हैं, सभी को लिखना है जितने हो, नहीं, एक एग्जाम्पल भी आपने लिखा ना तो दैट विल बी ओके। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अंडर कनेक्टिविटी, गिवन द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द रीजन, under the connectivity, given the economic potential of the region, and strategic importance, connectivity with ASEAN nations is of vital interest for India. Connectivity with ASEAN nations, connectivity with ASEAN nations is of vital interest to India. So this is connectivity. और क्या हो सकता है why ASEAN is important to India? We have already discussed. एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कनेक्टिविटी, that will give help connect through northeast also. Hey, many project is also been there with Bangladesh, Myanmar to connect into the India. Right? So next is northeast India. India's northeast region has the potential to become the new growth engine. India's northeast region has the potential to become the new growth engine for the country and is a gateway to the ASEAN. Next point, it is a gateway to the ASEAN. Northeast we can enter into the Myanmar and then Thailand because we have a boundary with the Myanmar, yes or no? ठीक है, तो वहाँ से हम Myanmar, Thailand and all that will be put a gateway. Next, जैसे गंगा मेकॉन जो हमने प्रोजेक्ट देखा, that is also connecting Northeast and Myanmar on all this. Next, it is important to integrate northeastern India with ASEAN. It is important to integrate northeastern India with the ASEAN region through road, rail and air link. India with the ASEAN region through road, rail and air link. Clear? Next is South China Sea. India has strategic economic interest in South China Sea. India has strategic economic interest in South China Sea region. South China Sea region and advocate for peaceful resolution of disputes. And advocate for peaceful resolution of disputes under United Nations framework. Under United Nations framework.
Next point. China's territorial conflict in the South China Sea. China's territorial conflict in the South China Sea threatens the future trajectory of India. Threaten the future trajectory of India's economic development. Of India's economic development. Future trajectory of India's economic development. Clear? So this is South China Sea. Next is Act East policy. Act East policy. Act East policy. India's trade and economic linkage in the Pacific. Indian trade and economic linkage in the Pacific are becoming stronger and deeper. Stronger and deeper. Next point. Asia's Eastern Commons. Asia's Eastern Commons are increasingly Eastern Commons means the Far East, ASEAN, East, ASEAN and Far East. चलिए ये सब जो इस इंडो पैसिफिक में एक्चुअली जो आ रहे हैं उन सब की बात कर रहा है कि सिर्फ इट इज नॉट एक्ट इज पॉलिसी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन, rather it is for the far eastern also, right? Because total Indo-Pacific region covers under this. So Asia's Eastern Commons are increasingly a vital facilitator. Increasingly a vital facilitator of India's economic development. Next one, economic development. Next one, with growing dependence on Malacca Strait. Malacca is between Malaysia and Singapore. The strait between Malaysia and Singapore is a Malacca Strait. ये बीच में जो गैप दिख रही है that is Malacca Strait. With growing dependence on the Malacca Strait for the flow of goods and services, Malacca Strait for the flow of goods and services, economic is increasingly a factor in India-Pacific policy. Goods and services, economic is increasingly a factor in India-Pacific policy. Increasingly a factor in India's Pacific policy. ठीक है. अच्छा एक टर्म आपने लिखा है इकोनॉमिक्स. आपके सिलेबस में इकोनॉमिक है या इकोनॉमी है? इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमिक्स. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू? कोई डिफरेंस है दोनों में या नहीं? तो फिर सिलेबस में इकोनॉमिक्स क्यों नहीं है, इकोनॉमी क्यों है? ये कोई प्लूरल नहीं है. इकोनॉमिक्स इज नॉट ए प्लूरल ऑफ इकोनॉमी. आपको मैं बता दूं, ये सिंगल इकोनॉमी की बात हो रही है, डबल की. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक?
हाँ, इकोनॉमिक्स क्या है? यहाँ इकोनॉमिक टर्म क्यों नहीं यूज हुआ, क्यों इकोनॉमिक्स टर्म यूज हुआ? तो इकोनॉमी में गुड एंड सर्विसेज नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज ऑफ मनी की बात हम जब करते हैं ना, खर्च करते हैं या फिर कुछ करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी मैनेजमेंट ऑफ दैट करेंसी इज इकोनॉमी बेसिकली। तो आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, हाउ द गवर्निंग ऑल इज रिलेटेड टू दैट मैनेजमेंट। यू विल कम टू नो व्हेन यू विल स्टार्ट इकोनॉमी। पहला ही डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द सिलेबस। हम गलती बहुत बार कर जाते हैं, दैट वी डू नॉट adhere to the syllabus. So these are the questions which should be asked by yourself. कहीं हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अच्छा वो उसका प्लूरल है, बॉय एंड बॉयज, नहीं, so this is not plural of that, there is a basic difference between these. ठीक है, it is just an extra knowledge. Welcome. Next is APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Is India a member of Asia Pacific Economic Cooperation? No. It is seeking support of ASEAN. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. So India is not a member of Asia Pacific Economic Cooperation. Support of ASEAN is vital. APEC is Asia Pacific Economic Cooperation. Right, in bracket write down Asia Pacific Economic Cooperation. India is not a member of APEC, and support of ASEAN is vital for India's entry into economic grouping. नहीं, India is not a member of APEC, that is Asia Pacific Economic Cooperation, and support of ASEAN is vital for India. Support of ASEAN is vital for India's entry into the economic grouping. Grouping. This is an APEC is a grouping of Asia Pacific Economic. Okay? So this is the why we have seen why ASEAN is important to India. Now next heading, importance of India to ASEAN. We have seen just right now the importance of ASEAN to India. Now we will see importance of India to ASEAN. सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस एक ही बात है, हाँ वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंस क्यों है। उसके बाद हमने लिखा कि इंडिया के लिए एशियान क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ रिलेशंस विद एशियान। नाउ वी आर सेइंग व्हाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर एशियान, राइट। इंपॉर्टेंस लिख लीजिए, सिग्निफिकेंस लिख लीजिए, दैट एनीथिंग यू कैन राइट। फर्स्ट इज ट्रेड एंड ट्रांजिट। First heading, sub-heading, first sub-heading. This is the main heading, importance of India to ASEAN, right? First is trade and transit. India supports uncontrolled rights of passage. India supports uncontrolled rights of passage. And other maritime rights in accordance with the international law. With the international law. Next point. India is a market for ASEAN exports of goods and services. India is a market for ASEAN export of goods and services.
clear? Second, south regional stability. हाँ जी, रीजनल स्टेबिलिटी, REGIONAL, रीजनल स्टेबिलिटी. amidst AMIDST, amidst the aggressive behavior of China, ASEAN nations want India to take and play leadership role in improving commerce, connectivity and security in the region. Amidst the aggressive behavior of China, ASEAN nations want India to take and play leadership role in improving commerce, connectivity and security in the region. Next point. India has been a source of strength for most Asian countries. India has been a source of strength for most Asian countries for its unequivocal stand on maritime disputes. India has been a source of strength for most Asian countries for its unequivocal stand on maritime disputes. Equivocal stand STAND, stand on maritime dispute. Clear? Next is South China Sea. China's aggressiveness in the region has raised aggressiveness in the region has raised India's importance for ASEAN. Next point. India has always advocated for peaceful negotiations. India has always advocated for peaceful negotiations and adherence to international law. Advocated for peaceful negotiations and adherence to international laws. So these are the reason why India has been important for ASEAN. ठीक है? Adherence to the international law means India always advocating to stick to the international law. Adherence का मतलब होता है to stick, follow strictly in letter and in spirit to follow the international law. ठीक है? Now write down challenges in India-ASEAN relations. कोई challenges है इनके बीच में? एक तो ये चैलेंज है कि इन्होंने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तो कर लिए, जैसे कालादान प्रोजेक्ट कर लिया, अभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, रुकावट, बातचीत चल ही रही है, अभी डिले चल रहा है प्रोजेक्ट्स में.
सॉरी, यस, दीज आर ऑल्सो द चैलेंजेस। जो म्यांमार और लाओस, ये जो गोल्डन ट्राइलेटरल वाले इलाके में है, ये भी एक चैलेंजेस है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना इस रीजन में इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज फेसेस बाय इन द रिलेशंस। ठीक है, तो राइट डाउन द challenges in India Asia relations. The first is lack of time bound implementation of projects is a huge challenge. Lack of time bound implementation of projects is a huge challenge. Like India Myanmar Thailand trilateral highways and India, Myanmar, Thailand, IMT, huge challenge. Like India, Myanmar, Thailand, trilateral highway and Kaladan project. Kaladan project किसके बीच में है? Kaladan project, India, Myanmar. Kaladan project is in India, Myanmar. India, Myanmar, Thailand trilateral highway and Kaladan project are still under process. Next, the trade and economic ties between India and ASEAN nations. The trade and economic ties between India and ASEAN nations. Are much below their potential. The trade and economic ties between India and ASEAN nations are much below their potentials. Continue the point. China is still the largest trading partner of the regional groupings. China still the largest trading partner of the regional groupings. Trading partners of the regional grouping, that is of ASEAN, followed by EU and USA. EU, second is EU, third is USA. First is China. Okay. Next, the free mobility of labor within ASEAN Economic Community region. The free mobility of labor. Mobility of labor within ASEAN Economic Community region REGION might hamper India's prospect. Might, MIGHT, might hamper India's prospect in terms of mobility of skilled worker skilled workers, which has just been implemented with the ASEAN India Services Agreement, which has just been implemented with ASEAN India Services Agreement. India Services Agreement. ठीक है. नेक्स्ट चैलेंज, स्लो पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड लैक ऑफ विलिंगनेस. स्लो pace of implementations and lack of willingness.
to take risk has deterred. Slow pace of implementations and lack of willingness to take risk has deterred India's public sector enterprises and private companies. India's public sector enterprises and private companies slow pace of implementations and lack of willingness to take risk has deterred India's public sector and private sector companies from making substantive investment in the region. Investment in the region. Next point. Territorial disputes. Territorial disputes. ASEAN member states are engaged in territorial disputes. ASEAN members are engaged in territorial disputes with interested power like China. With interested power like China. ठीक है, अब चाइना भी क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी को. दैट इज ऑल्सो बिन ओवरलैप बाय द क्लेम ऑफ द फिलीपींस. वो भी कहता है कि साउथ चाइना सी मेरा है. मलेशिया इज ऑल्सो सेइंग मेरा ये साउथ चाइना सी. ब्रूनेई इज ऑल्सो सेइंग चाइना साउथ चाइना सी. तो ओवरलैप है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का. दिस इज वन ऑफ द रीजन. अब ये पूरा रीजन डिस्प्यूट्स की वजह से इट्स अंडर थ्रेट or dispute. So this is one of the challenges. Did you get that? Right? Like the claim of South China Sea by the China, Philippines, Vietnam, Brunei and all has always been claiming, and this has been overlapping. Okay? Next. Indo-Pacific rivalry. Indo-Pacific rivalry. Rivalry. R-I-V-A-L-R-Y. Rivalry. The assumption of China as the primary economic partner. The assumption of China as the primary economic partner and the US as the primary security guarantor. And the US as the primary security guarantor has been at the heart of ASEAN balance. Has been at the heart of ASEAN balance. Heart of ASEAN balance, but due to Russia-Ukraine war, has threatened the balance and aggravated the tension. But due to the Russia-Ukraine war has threatened the balance and aggravated the tensions. Aggravated, बढ़ाना. The tension has increased in the region. Next point. Due to the major power rivalry in the Indo-Pacific region,
due to the major power rivalry in the Indo-Pacific region, has threatened the stability of the region and prosperity. Has threatened the stability and prosperity of the region. Prosperity and stability of the regions. ठीक है, next part. Unstable geoeconomics. The geopolitical tension in the Indo-Pacific is producing geoeconomic consequences. Is producing geoeconomic consequences where issues of trade and technology cooperations and supply chain resilience is at peak. And supply chain resilience is at peak. It's clear? So these are the certain challenges. Supply chain resilience, RESILINE, at peak, 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 top, at highest, right? So these are the certain challenges. Now write down the conclusion or solutions. What should be done or done to what? India. Now what India has to do to improve its relations with Asians. So you can write down way forward. So in response to China's BRI initiative, first point, way forward. In response to China's BRI initiative, India needs to get at least a couple of major connectivity projects. India needs to get at least a couple of major connectivity projects off the ground. To demonstrate its policy of Act East policy. To demonstrate its policy of Act East policy. Next point. Several Indian states government has already developed linked. Several Indian state government have already developed links with countries like Singapore and Malaysia. Link with the countries as Singapore and Malaysia in terms of infrastructure. Next point. In terms of infrastructure. Next point. India and ASEAN can leverage the emerging scenarios. India and ASEAN can leverage, LEVERAGE, leverage the emerging scenarios and support each other
to build new and resilient supply chain. To build new and resilient supply chain. Resilient, R-E-S-I-L-I-E-N-T. Resilient supply chain. Next point. ASEAN and India must upgrade their logistics. ASEAN and India must upgrade their logistic services and strengthen transportation infrastructure. Yes. Next point. India and ASEAN needs to work towards India and ASEAN needs to work towards ensuring maximum utilization. India and ASEAN needs to work towards ensuring maximum utilization to resources without harming the maritime environment. Maximum utilization of resources without harming the maritime environment or marine environment. Next point. ASEAN should emphasize the principle of UNCLOS, UNCLOS, capital UNCLOS. What is UNCLOS? Law of the sea. ठीक है, law of the sea, to solve the disputes in South China Sea region. To solve the disputes in the South China Sea region. Next, Indian ASEAN should also enhance regional tourism and people-to-people connectivity. India and ASEAN should also enhance regional tourism and people-to-people connectivity. Clear? So this is Indo-ASEAN relations. Now we will move to the India-Central Asia relations. So how many countries does come under the India-Central relations? In Central Asia, 5. Now these Central Asia region, ये जो Central Asia जो है ना आपका, ये this is Central Asia. This is just a need to show the relation. This is ये जो Central Asia regions है ना, these were a part of USSR before 1991. Once the disintegrations of USSR happened, USSR का disintegration होता है आपका 1991 में, right? These regions come as an independent nation. ठीक है? Now can you or do anyone have an idea that
डू इंडिया एंड दी साउथ एशियन नेशन हैव एनी एंशिएंट रिलेशन? कोई हिस्टोरिकल है? एक तो सिल्क रूट का रूट रहा ये, ठीक? मुगल्स हैव कम फ्रॉम हियर एंड इट इज ऑल्सो सम ऑफ द एक्सपर्ट सेज कि आर्यन भी यहाँ से आए। आर्यंस ऑल्सो केम फ्रॉम दीज रीजन्स। सो इट मीन्स कि साउथ एशियन रीजन के साथ इंडिया का रिलेशन जो है वो सिविलाइजेशनल रिलेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू। ये रीजन आपका हिंदू कुश वाला इलाका है, हिंदू कुश का रीजन, जहां से ये सॉरी दे कम टुवर्ड्स दिस। आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो इंपॉर्टेंस वी कैन से दैट हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस भी है इनका, it is linked from the civilization. साकास, हाँ बहुत सारे हैं, साकास, कुषाण, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार, राइट? इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्यन, है आर्यन, साकास, कुषाणास। फिर मुगल्स भी इधर से ही आए हैं आपके। मुगल्स कहाँ से आए हैं आपका? वो दो है आपका, उज्बेकिस्तान, राइट, और टर्किश और उज्बेक का जो ब्रीडिंग है दैट इज मुगल। तो केम फ्रॉम द मुगल फ्रॉम दिस एरिया। ठीक है। तो देयर आर 5 रीजन्स इन द साउथ एशियन एज। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। 1991 में जो यूएसएसआर से अलग हो गए। ठीक है, राइट? नाउ वी विल सी द रिलेशंस विद दिस। नाउ टू कनेक्ट टू द साउथ सेंट्रल एशिया, हमने ऑलरेडी वी हैव सीन कि थ्रू द चाबहार पोर्ट, जो ईरान में चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, दैट इज थ्रू द चाबहार पोर्ट, थ्रू अफगानिस्तान, जेला डालाराम आपका रोड लिंक जो है, थ्रू दैट इट इज एंटरिंग इनटू द साउथ चाइना, सॉरी सेंट्रल एशिया। दिस इज अफगानिस्तान, मजार शरीफ, हरात, यहाँ आपका ईरान, यहाँ से फ्रॉम हियर चाबहार पोर्ट एंटरिंग इनटू द अफगानिस्तान, और फिर यहाँ से ये इट विल एंटर इनटू द सेंट्रल एशिया, राइट? फिर आपका INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इज ऑल्सो कनेक्टिंग साउथ सेंट्रल एशिया टू इंडिया, रसिया से होते हुए जो आया। इट वी हैव सीन दैट एक लार्जर रूट हो रहा था, यस और नो? दिस इज द स्मॉलेस्ट रूट to connect. Is this clear? So we have also good relations with India and Central Asia. ठीक है। फिर second is related to this is SCO, वो भी यहाँ से related है। We will do it separately. हम SCO, BIMSTEC और SAARC, India SCO relation, G20 जो अभी recently चल रहा है। Now G20 में what we will do the traditional part। ठीक है। आपको क्या करना है उसमें, जो करंट डेवलपमेंट जो भी हो रही है, क्योंकि अभी उसकी मीटिंग चली रही है, ट्रेड मीटिंग, लेबर इंटेंसिव मीटिंग, ग्रुपिंग्स और एवरी मीटिंग इज देना, उसको इनकलकेट करना है अकॉर्डिंग इन द दैट टॉपिक जो रिसेंटली इट इज हैपनिंग। होल ईयर इंडिया इज गोइंग टू शेयर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द G20 टिल दिसंबर। गेटिंग माय पॉइंट? So that should be inculcated into that. ठीक है। Now nature of the questions related to this is in terms of SCO हो सकता है, और how the India relation with the Central Asia has been impacting, और how it has been impacted by the Russia-Ukraine war या फिर ACOs के साथ relations के लिए। So now we are doing the relations in a grouping, ASEAN, SCOs, which has been mentioned in the syllabus. ठीक है। So we have seen the neighboring nations, neighboring India neighbor, we have seen the bilateral relations. Now we are seeing the groupings and its impact on regional groupings and international groupings, and its impact on the India's foreign policy. Is this clear? ग्रीक भी यहीं से हैं, साकाज, कुषाण, हून, सब यहीं से आए हैं, राइट?
So you can, so this is actually a historical. ठीक है, अब देखिए ये ट्रेड रूट है. दिस इज अ गैस फील्ड इन तुर्कमेनिस्तान. तापी या नहीं है, दैट इज प्रपोज. तापी, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया. TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया. तो दिस इज गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट. पाकिस्तान को करा लेंगे मंजूर, अब क्या टेंशन. सॉरी, हाँ, इस चाइना क्यों क्रिएट, चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं. चाइना प्रेशराइज करेगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के थ्रू वो क्रिएशन, वो आई मीन इशू क्रिएट करेगा. चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं. और वी हैव सीन इन 1955 द POK इज मेंट, द एरिया ऑफ POK इज मेंट ट्रांसफर्ड टू चाइना बाय द पाकिस्तान. टेरिटोरियल सोवरेनिटी की बात तभी है, सिक्योरिटी थ्रेट एंड एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए. सो नाउ राइट डाउन, वी विल राइट डाउन द significance of the India and Central Asia relations. ये that all we have know that Mughals यहाँ से आए and everything that you can cooperate, right? चलिए. Significance of the relations. India and Central Asia region. First, India's active presence in the region. India's active presence in the region will contribute to stability and development. Will contribute to stability and development. In the entire Central Asian region. Next, Central Asian countries also gain from techno-economic potential of Central Asian countries. Also gain from techno-economic potential of India. Due to the skilled manpower in technological field like IT. Techno-economic potential of India due to the skilled manpower in technological field like IT. IT, information technology. Next, Central Asia's desires for diversifying. Central Asia's desires for diversifying hydropower and energy export route. ROUTES, route, would correspond with India's quest for diversifying imports. Would correspond with India's quest for diversifying imports.
next point. Quest, QUEST, quest for diversifying import. ये जो रीजन है वो आपका नेचुरल गैस abundance है, ये रीजन, ठीक. The import, India is also looking for the import of natural gas. So this can be a beneficial. This sector can be a beneficial for India's import, right? And next we are going to write down about the India's soft power related to skilled worker, manpower in IT sector and all. उससे सेंट्रल एशिया को इम्पोर्टेंस मिलेगा. स्किल्ड वर्कर जो इंडिया का है IT related, they will work there and it will enhance the Central Asia's regions, right? So the soft power of India in terms of skilled workforce and technological development. The soft power of India in terms of skilled workforce and technological development. Technological development, comma, can help in significant development. Can help in significant development of the service sector of the region. Clear? So this is the significance of the relations. कैसे एक दूसरे को फायदा होगा एक दूसरे से रिलेशन रखने के बाद, राइट? नाउ नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया टू इंडिया. हाँ, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस. व्हाई सेंट्रल एशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? सो इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया टू इंडिया. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? पहले तो ज्योग्राफिकली इसका देखें, यहाँ बताइए दो. यस, वो तो है. दूसरा ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो एशिया और यूरोप का गेटवे में है ये, कनेक्टिंग टू द. अगर हम इसके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे तो हम यूरोप भी ट्रांजिट कर सकते हैं. तो इस यू कैन से द कनेक्शन बिटवीन एशिया एंड यूरोप. So this is one of the reasons, right? Second, it is an richly endowed for the natural and copper and all these, right? So economic perspective से भी अच्छा, हमारे energy relation sector से भी it is very good for us कि हम उनके साथ relation establish रख सके, right? So these are the certain point why Central Asia is important. So first point, write down that Central Asia is strategically positioned. Central Asia is strategically positioned. यही देखिए, ताशकंद हुई थी ना. ताशकंद समझौता कब हुआ था? 65 में वॉर हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान. तो विच इज बिन रिजल्टेंट और जिस वॉर को एंड आई मीन थ्रू द एग्रीमेंट, दैट इज ताशकंद, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री गए थे, वेर ही वॉज डाइड आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट. ताशकंद समझौता, ठीक है. तो सेंट्रल एशिया इज स्ट्रेटेजिकली पोजीशन एज एन एक्सेस पॉइंट. स्ट्रेटेजिकली पोजीशन एज एन एक्सेस पॉइंट बिटवीन यूरोप एंड एशिया. Europe and Asia, which offer extensive potential for trade, investment and growth. Extensive potential for trade, investment and growth. Next, the Central Asia is endowed with commodities such as crude oil, natural gas. The Central Asia is endowed or having an abundance of, endowed with
commodities like crude oil, natural gas, gold, copper. Central Asia is endowed with commodities like crude oil, natural gas, gold, aluminum, iron. ठीक है, next point. India is one of the major importer and consumer of energy. And import nearly 2/3 of its petroleum requirement. Importer and consumer of energy. Producer नहीं है हम, importer and consumer of energy, and import nearly 2/3 of its petroleum requirement from the region. Requirement of its petroleum requirement, right? Next point. Caspian Sea. ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था. कैस्पियन सी इज बॉर्डर विथ, किन किन के साथ बॉर्डर है कैस्पियन सी का? सो द कैस्पियन सी एंड सेंट्रल एशिया are emerging alternative source. Caspian Sea and Central Asia are emerging alternative source for supply of oil and natural gases. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. सप्लाई ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. नेक्स्ट, सेंट्रल एशिया रीजन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज. सेंट्रल एशियन रीजन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज. In developing strong defense ties by strengthening strategic and security cooperation. Ties, TIES, by strengthening strategic and security cooperations. With a strong focus on military training, strategic and security cooperations. Focus on military training. Next point. India has unveiled. अच्छा, मुझे लगा कुछ पूछना है आपने. मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्या? हल्का सा, थोड़ा. 19 है या 20 है? ओके, ठीक है. इंडिया हैज अनवील्ड, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी इन 2012. India has unveiled the Connect Central Asia policy in 2012 to fast track India's relation with Central Asian states.
ठीक है, एशियाज India's relations with Central Asian states. So this is the reason why Central Asia has been significant for India, right? Now देखिए relations between India and Central Asia means area of cooperation. किन areas में what is the relations? First is energy. हम न्यूक्लियर भी ले रहे हैं सेंट्रल एशिया से, यस और नो? न्यूक्लियर एनर्जी कजाकिस्तान हमें सप्लाई कर रहा है न्यूक्लियर फॉर द लॉजिस्ट है कजाकिस्तान, राइट? फर्स्ट, सॉरी कंफ्यूजन है कोई? नहीं. The Central Asian regions have an abundance of energy resource. The Central Asian regions have an abundance of energy resources. Continue the point. Kazakhstan is one of the first countries. Kazakhstan is one of the first countries with which India launched civil nuclear cooperations. India launched civil nuclear cooperations and Kazakhstan supplying nuclear fuel to India since 2010 and Kazakhstan supplying nuclear fuel to India since 2010. ठीक है, supplying nuclear fuel to Indian nuclear plant since 2010. India 2010 2010 से. नेक्स्ट इज तापी, TAPI प्रोजेक्ट. राइट, it is a trans-country natural gas pipeline. Trans-country natural gas pipeline from Caspian Sea. It is a trans-national or country natural gas pipeline from Caspian Sea, Turkmenistan to India. From Caspian Sea, Turkmenistan to India through Afghanistan and Pakistan. Is an important to connect energy rich Central Asia. Is an important to connect energy rich Central Asia to South Asia. Energy rich Central Asia to South Asia. ठीक है, ये हमने अभी देखा था ना, सॉरी वहां से आ रहा, देखिए क्या नाम है, गालकेंसन गैस फील्ड, तुर्कमेनिस्तान के पास से, वहां से वो पाइपलाइन तापी प्रोजेक्ट है ये. ठीक है, दिस इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन. राइट, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस. Security and defense. Next subheading.
Area of cooperations. Security and defense. First point, security, stability and prosperity of Central Asia. Security, stability and prosperity of Central Asia is imperative for peace and economic development of India. Security, stability and prosperity of Central Asia is imperative for peace and economic development of India. India and Central Asian countries have a shared interest. India and Central Asian countries have a shared interest. Shared interest in the stability of Afghanistan and counter-terror initiatives. Why both country wants that the stability should be prevailed in Afghanistan? क्यों दोनों चाहती है सेंट्रल एशिया और इंडिया कि हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनी रहे, वहां पर टेररिज्म हो नहीं? Yes, because through Afghanistan is only one mediator or link which connects Central Asia और इंडिया. हाँ, वो तो सेंट्रल एशिया के साथ डिपेंडेंस हो गई, लेकिन सेंट्रल एशिया के साथ हमारा एक ही कनेक्शन है, अफगानिस्तान, दूसरा कोई है नहीं. और सेंट्रल एशिया भी हमसे अफगानिस्तान के थ्रू ही कनेक्ट होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर बोथ नेशन वांट्स दैट इस रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, तभी ये स्मूथ रिलेशंस फंक्शंस करेगा. अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान से फिर इट विल बी एंटर इनटू द ईरान चाबहार और वहां से फिर मुंबई पोर्ट पे. ठीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया कंडक्ट्स एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज. फर्स्ट लिखिए, इंडिया कंडक्ट्स एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज हाइफन हाइफन फर्स्ट खंजर. खंजर खंजर KHANJAR खंजर. is a military exercise between India and Kyrgyzstan. India and Kyrgyzstan. It is a joint military exercise. India and Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. ठीक है. सेकंड, काजिंद. काजिंद काजिंद KAZIND काजिंद. नहीं, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान. यस, काजिंद इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड कजाकिस्तान. काजिंद. Khanjar is between India and Kyrgyzstan. Kazind is between India and Kazakhstan. Sorry. ठीक है. This is security and defense. Next is SCO. हम SCO को separately करेंगे, India and SCO, but उससे थोड़ा how it is impacting the Central Asia. Just we will write in that terms. Shanghai Cooperation Agreement. Okay, so write down benefit of SCO to India.
बेनिफिट, एक्चुअली ये एरिया आप यूरोप, आप इसको ये भी बोल सकते हैं, यूरेशिया भी बोलते हैं इसे, यूरेशिया। इट इज अ कनेक्शन टू यूरोप एंड एशिया। ये पार्ट रसिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी है, एशियन कंटिनेंट में भी है। रसिया इज बीन एक्सटेंडेड, यूएसएसआर जो बना था दैट इज फॉर्म्ड विद द नेशंस ऑफ टू कंटिनेंट, यूरोप एंड एशिया, ठीक है। वी हैव सीन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ लंदन कॉन्फ्रेंस एंड पेरिस कॉन्फ्रेंस, जिससे रसिया को एक बहुत बड़ा पार्ट दे दिया गया था इन द यूरोप, ड्यू टू विच इट हैज बिकम अ सुपर पावर। बाइपोलैरिटी वहीं से आती है, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ एससीओ टू इंडिया, द फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स, एससीओ प्रोवाइड्स another venue for engagement with China and Pakistan. SCO provides other venue for engagement with China and Pakistan, building up trust through cooperations. Building of trust through cooperations. Next point. SCO will help India fulfill its aspiration. It will help India fulfill its aspiration of playing an active role, aspirations in playing an active role in its extended neighborhood, playing an active role in its extended neighborhood, as well as checking the ever growing influence of China in the region. How China is growing its influence of China in region. China कैसे influence बढ़ा रहा है in Central Asia? Yes, BRI initiative के थ्रू, एक वही है जिसके थ्रू वो चाइना जो है वो, हाँ नहीं बॉर्डर तो है ही, प्लस BRI इनिशिएटिव्स लेकर जा रहा वो, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसको भी रोकना जरूरी है। इन द रीजन, इंडिया विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इट्स ड्यू रोल इन स्टेबलाइजिंग, इंडिया will get an opportunity to play its due role in stabilizing the situation in Afghanistan. India will get an opportunity to play its due role, due, D-U-E, due role in stabilizing the situation in Afghanistan. Clear? So these are the benefits. Baaki rest we will see in the when we will do the India SCO. We will do it different separately. India SCO relation हम separately करेंगे. So here also it should, जब भी आप अगर सेंट्रल एशिया के में लिखना है तो that is helping, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट कोऑपरेशंस। नहीं, next area of cooperation between India and Central Asia, development cooperation. Development cooperations between India and Central Asia has focused on line of credits,
development cooperations between India and Central Asia has focused on line of credit that financed development and manufacturing project. That finance development and manufacturing projects. Next, the training program under inverted comma लिखिए Indian Technical and Economic Corporation, ITEC, Indian Technical and Economic Corporation. The training program under Indian Technical and Economic Corporations continued to flourish the region. Next point, grant to Tajikistan to rehabilitate and modernize Tajikistan. Grant to Tajikistan to rehabilitate and modernize Warsaw 1 hydropower plant. Warsaw 1 और फर्स्ट आप जो भी लिखे Warsaw 1. This is in Tajikistan. Hydropower plant through BHEL and NHPC. Through BHEL, BHEL, वो BHEL खाने वाला नहीं. This is Bharat Heavy Electric Limited, BHEL, and NHPC, National Hydroelectric Power Corporation. So they are providing an assistance in developing the Warsaw 1 in Tajikistan. ठीक है. Next, there are plans to set up a medical and educational e-network. There are plans to set up medical and educational e-network, electronic network. E-network means electronic network. E-network for the 5 countries in region which provide remote medical and educational support to the hospitals, which provide remote and medical educational support to hospitals and universities. Next, so this is development cooperations. Next is trade and investment. The economic development of Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan. The economic development of Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan.
Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan. Turkmenistan, Uzbekistan and Kazakhstan. Leads to the development of sectors like IT, pharmaceutical and tourism. Leads to the development of sectors like IT, Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan. इनके आपको वो that is they are surrounded by the Caspian Sea. ठीक है, तो आपको वो देखना होगा the boundary of Caspian Seas and all. ठीक है, so that is more important. Geographical point of view से Central Asia is also important. Geography में भी आप Central Asia के बारे में पढ़ेंगे. Development of sectors like IT, pharmaceuticals and tourism. And India has expertise in these sectors: IT, pharmaceuticals and tourism. Leads development of sectors like IT, pharmaceuticals and tourism. And India has expertise in this sector. Expertise in these sectors and a deeper cooperations between the regions and a deeper cooperations between the region will give a fresh impetus to trade relations. Will give a fresh impetus, IMPETUS, trade relations between the two. Trade relations between India and Central Asia. Next, Kazakhstan is India's Kazakhstan is India's largest trade and investment partner in Central Asia. Largest trade and investment partner in Central Asia. ठीक है. Next is connectivity. यहाँ दो कनेक्टिविटी है, एक वी हैव ऑलरेडी डन दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और एक अजगाबाद एग्रीमेंट. सो दिस ऑल दीज आर द टू एग्रीमेंट रिलेटेड टू अ कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. ठीक है, तो लिखिए द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ये आपका रेल, रोड, सी रूट और शिप रूट है. INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके बारे में वी हैव डन ना, वी हैव ऑलरेडी डन, वी हैव सीन द मैप एंड ग्राफ ऑल्सो. तो फर्स्ट इज INSTC. ठीक है. सेकंड Ashgabat agreement. Ashgabat agreement, that is Turkmenistan, sorry, Ashgabat agreement, ASHGABAT, came into force in 2016. Came into force in 2016. ठीक है, write down related to Ashgabat agreement. It is an agreement of a multimodal transport agreement between. It is a multimodal transport agreement. Multimodal means
different type of mode, rail B, route B, road C, ठीक है. A multi-modal agreement, transport agreement between India, Iran, छूट गया क्या कुछ? Ashgabat agreement is a multi-modal transport agreement between India, Iran, Kazakhstan, Oman, Turkmenistan, India, Iran, Kazakhstan, Oman, Turkmenistan and Uzbekistan. ऐसे आ रही है. फिर वो सी रूट से ये पूरा आपका वो दिस रोड रूट हो जाएगा, ठीक है. फिर वो सी ईरान तक आने के बाद चाबार पोर्ट से आकर के देन इट विल एंड ओमान. वी हैव सीन द ओमान, गल्फ ऑफ ओमान हमने देखा था. यस और नो? देन इट विल बी एंटर इनटू दिस. फॉर उज्बेकिस्तान, फॉर क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, for creating an international transport and transit corridor which facilitates transport and transit corridor which facilitate IR कितने क्लास चलेगी? वो तो मैनेजमेंट से मैंने बात कर ली है सर, नॉट एन इश्यू. कितने क्लास तक IR लेनी है वो मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है. दैट इज अ माई एरिया ना. या आज पूछ रहे हैं कि 1 बजे तक चलेगी या लंबी चलेगी? ऐसा है तो वी आर डूइंग द क्लास टिल 1 फॉर 2 आवर्स. तो आज 2 ही घंटे चलेगी. अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आज कितने घंटे चलेगी तो 2 घंटे. Transit corridor facilitating transport of goods between Central Asia and Persian Gulf. Gulf region. It's clear? So these are the area of cooperations. Now we will do the challenges. तो फर्स्ट चैलेंज, चाइना का यहाँ पर पकड़ बहुत ज़्यादा है सेंट्रल एशिया में, रसिया और चाइना का. तो उस पकड़ के बीच में इंडिया को अपनी पकड़ बनानी है. तो दिस विल बी क्रिएट ए ह्यूज चैलेंज. ठीक है. तो फर्स्ट चैलेंज, रसिया एंड चाइना हैव अ डीप इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज. रसिया एंड चाइना have a deep economic and security ties with the Central Asian countries. Making it a challenge for India, Asian countries, Central Asian countries, Russia and China has a deep economic and security ties. हाँ ठीक लग रहे हैं. With Central Asian countries, making it difficult or challenge for India to find strategic space in the region. Finding a space in the region. ठीक है. This is first challenge. Second challenge is INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है.
So it requires a huge amount economic, so it is still a challenge. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए INSTC International North South Transport Corridor which would pass through Iran is still underdeveloped and requires huge investment. INSTC which pass through Iran is still underdeveloped and requires huge investment. ठीक है, तो दिस इज चैलेंज सेकेंड. नेक्स्ट चैलेंज क्या हो सकता है? नो डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया. तो हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है. किस पे? या तो पाकिस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ. उनके साथ अगर हमारा रिलेशंस खराब हुआ, इफ वी गो विद इन अ नेगेटिव रिलेशंस विद ईदर ऑफ द नेशंस, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, सो कितना भी अच्छा रिलेशंस हमारा हो सेंट्रल एशिया से, वी आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद देम, तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे. तो देयर विल बी अ हिंड्रेंस ऑलवेज. कहाँ तजाकिस्तान के साथ हमारा है? इंडिया के साथ कहाँ है? दिस इज अफगानिस्तान. तो वही हम आज तो हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट अफगानिस्तान के साथ नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कम अंडर द पीओके. तो डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो तब भी नहीं है. अगर हमने पीओके ले भी लिया तो हम डिपेंडेंट तो अफगानिस्तान के साथ ही होंगे. उनके साथ भी हमारे रिलेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए. तो मतलब एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से इट इज ऑल्सो चैलेंज इन द रिलेशन. ठीक है, सो लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. ठीक है, तो अगर हम सेंट्रल एशिया जाना है तो अफगानिस्तान से जाइए, और शॉर्टेस्ट रूट आपका पड़ता है पाकिस्तान के थ्रू. पीओके से अगर हम मान लीजिए चाहते हैं, दिस इज शॉर्टेस्ट रूट. और पाकिस्तान से हमारा हमेशा रिलेशन प्यार मोहब्बत का है, तो जाने ही नहीं देता है या नहीं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. नेक्स्ट, राइट डाउन. The region border, the region REGION, the region's border with Afghanistan are extremely porous for militant. Porous for militant, POROUS, for militants. And also engagement in drug trafficking and weapon proliferation. And also engagement in drug trafficking and weapon proliferation. Weapon proliferation, PROLIF, drug trafficking and weapon proliferation. ठीक है, एक चैलेंज तो आपको पता ही है, पता है, वो हर जगह लिखना है. दैट इज अ रामबान, चाइनीज इन्फ्लुएंस BRI इनिशिएटिव. और कहीं भी आपको कुछ नहीं समझ में तो एक इन्फ्लुएंस आप वो डाल दीजिए, चाइनाज प्रेजेंस. और यहाँ तो है ही, बाउंड्री भी लग रहा है और इन्फ्लुएंस भी है अपने. द वेरी फर्स्ट यू हैव रिटन. सो नेक्स्ट इज चाइनीज प्रेजेंस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द चाइनीज प्रेजेंस, इट मीन्स वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ BRI इनिशिएटिव. वो मंचूरियन और हक्का नूडल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं. तो चाइनीज प्रेजेंस. तो सेंट्रल एशिया इज अ पार्ट ऑफ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव. ठीक है, इज इट क्लियर? इसके बारे में बहुत डिस्कस किया था, आप लिख सकते हैं खुद से, और एक दो पॉइंट ही लिखना होगा जब भी, क्योंकि आपके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट होगा. नेक्स्ट इज तापी. तापी project and IPI project in Iran, Pakistan, India project, pipeline project.
तापी प्रोजेक्ट, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India project, and Iran, Pakistan, India project, IPI project, are not Iran, Pakistan, India project, pipeline project, are not moving smoothly due to Pakistan and Afghanistan. Are not moving smoothly due to Pakistan and Afghanistan. दोनों क्या कर रहे हैं? They both are hindering the project. So these are the challenges between India and Central Asia. तो इसका solutions क्या होगा? Now to increase the relations soft power के through, right? Investment और लेकर आने से, रशिया के interference से थोड़ा सा हम उसको कर सकते हैं. So these are the way forward solutions. So write down way forward. हाँ, yes. So that can be done. Turkmenistan, Afghanistan, India, Pakistan. ठीक है. तो India could use first under the way forward. India could use the support of Moscow. Use the support of Russia. Moscow, Russia, to restrict the Chinese influence. Restrict the Chinese influence in the region. Next, India can further strengthen the relations using soft power. Strengthen relations by using soft power like Buddhism, yoga, Bollywood. वहाँ पे बॉलीवुड भी बहुत फेमस है सेंट्रल एशिया में. So these are the soft power through which India can strengthen its relations. Next, education and medical field provide an excellent opportunity education and medical field provides an excellent opportunity for India ठीक है. Next, the institute and strengthen defense and security dialogue to institute and strengthen defense and security dialogue with Central Asia. So these are the solutions. To institute and strengthen defense and security dialogue with Central Asia. Clear? एक लास्ट लिख लीजिए. A forum of India and Central Asia region. A forum of India and Central Asia region. Think tank. A forum of India and Central Asia region think tank should be set up. Should be set up. Is it clear? So this is India and Central Asia. Now after this we will do India, Europe and India, Africa. ठीक है. उसके बाद हम will enter into the Central Asia. हाँ, ये ऊपर में है. Sorry. Next is India, Europe. और इंडिया यूरोप हम EU के थ्रू करेंगे, यूरोपियन नेशंस के थ्रू करेंगे. ठीक है. सो दिस आर द नेशंस इन द EU. चलिए, थैंक यू. So we'll continue in the next class. So thank you.